हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एटम्स ड्रॉ करना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पे ये रहा एटम का न्यूक्लियस। इसमें दो पार्टिकल्स रहते हैं, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। उसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है वो रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट्स है इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे। ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 एंड सो ऑन। इसे के, एल, एम एंड सो ऑन भी कहा जाता है, लेकिन हम ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 ये कहेंगे। अब ये रहा ऑर्बिट 1, ये रहा ऑर्बिट 2। कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज 2n स्क्वायर। n is number of ऑर्बिट। ओके, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट जो शेल है या फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 2 into 1 स्क्वायर, दैट इज 2। सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 2 into 2 स्क्वायर, दैट इज 8। थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 2 into 3 स्क्वायर, दैट इज 18 एंड सो ऑन। ओके, अब जो भी एलिमेंट है उसका एटम जो है, एटम्स का लास्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट जो भी होगा उसमें 8 से ज्यादा एटम नहीं रह सकते। इसका मतलब अगर इसका जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इसमें 8 से ज्यादा मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। 8 या 8 से कम रहना चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसके पास सिर्फ, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो इस केस में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, सो रिमेंबर दिस नंबर: फर्स्ट ऑर्बिट 2, second orbit 8, third orbit 18 and so on. Now move on to atomic number. What is atomic number? The number of proton in any atom of any element is called atomic number. इसका मतलब ये जो एटम का न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन है। The number of proton in an atom is called atomic number. और हमने पहले भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, will always be equal to make the thing neutral. Okay, so Z atomic number is denoted by Z. Z equal to number proton, or we may say Z equal to number of electrons, but it is defined as number of proton. Okay, now second thing is that mass number. The mass number is defined as the sum of total number of proton and neutron present in the nucleus of the atom. So in a nucleus, two particles are there, proton and neutron. So the total number of particles present in a nucleus, that is number of proton plus number of neutron, is called mass number, which is denoted as A. Now, a particle or an element is written as, let's say X is an element. This is atomic number and this is mass number. It is written as this format. Okay, so now we can say from Z we can find out number of proton as well as number of electron, and from mass number we can find out
number of neutron. Okay, now let's take an example. Let's say for chlorine 1735. This is atomic number Z. This is mass number A. So number of proton in chlorine is 17. Number of electron in chlorine is 17 and number of neutron in chlorine is 35 minus 17. If we deduct the atomic number from the mass number, we will have number of neutrons. So in this case, it is 18. Now, this is nucleus of chlorine, protons 17, neutrons 18. Now, orbits. How many orbits will be there? Now, electrons 17. As we discussed earlier, in first orbit, there must be 2 electrons. In second orbit, 8 electrons, not more than 8. First orbit, not more than 2. Third orbit, not more than 18. Okay. If it is not a last, okay. If it's a last, then 8 is the maximum number. Now, in this case, number of electron is 17. So, in first orbit, there will be 2 electrons. We have 15 more. In second orbit, we have 8 electrons. We have 7 more. So, in third orbit, 7 electrons. So, in first orbit, 1 electron, 2 electron. In second orbit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in third orbit, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. So this is the atomic structure of chlorine, which have 17 atomic number and 35 mass number. Okay.